Good evening, students. So today we will be discussing about linear regression. Okay, now what is linear regression? What is it about? And what are the core concepts about linear regression? Everything we are going to discuss today. First of all, let me tell you, this is a supervised machine learning algorithm. Simple thing. Supervised linear regression is a supervised machine learning algorithm. Now, linear regression. Let us talk about a straight line. Have you all know about a straight line? There is an equation of a straight line. Let me discuss that, and with that we will come to the linear regression. We know that there is an equation of a straight line. Equation of a straight line is y equal to mx plus c. Okay, you all know about it. Now now I am going to discuss the core things about it. M is the slope. M is the slope or gradient. Now what it is, we will discuss later on. X is the independent variable. C is the intercept. And y is the dependent variable. Okay, that means in linear regression, we have one input feature, which is x, and only one output, that is y, and the output is numerical. Output is numerical. Understood? Now what I am saying, y is the dependent variable, m is the slope or gradient, x is the independent variable, and c is the intercept. Now what are all these things? We are going to discuss in some time. First, let me take an example. Let me take an example of hours of study. Hours of study. जिसको मैं x ले रहा हूँ, and result जिसको मैं y ले रहा हूँ. We all know, जितना हम टाइम देंगे पढ़ाई में उतना रिजल्ट बेटर होगा. We all know about it. If we study more, the result will be the best. If we study more and more, the result will improve with time. Understood? So we can write it like this. Hours of study. The table, it will look like this. Let me tell you. Hours of study. Bracket में x and the result, which is the output, y. Okay. Now if of hours of study is 15 hours, the result is 97%. If hours of study is 2 hours, then it is 47%. If hours of study is 5 hours, it is 56%. If hours of study is 1 hour, then it may be 40%. If hours of study is 0.5, half an hour, so it can be that the person can fail, 27%. So can you see this? The hours of study, this one is the x and this one is the y. Now what happens? With the help of this data, we are going to make a straight line. Okay, x and y in 2 dimensions. Let me tell you like this. This one is x, this one is y. X is what? Hours of study. And this one is the result. Now hours of study is, we can write like this, 7 to 7 12. This one is 0, then 12 plus
517, it's like this, dot dot dot, ऐसे करके चल रहा है, it is going on, and result is, you can say 30, 50, 70, 90, and at last is 100. It's like this. Now what is written over here? 1597, 15 hours. 15 hours, it can be like this, and the percentage is 97. So you can write it like this thing. Okay, this is 1597. 15 is the hours of study, 97% is the result. Okay, hours of study is 2 and 47%. Hours of study is 2 and it is 47%. You can write it like this. Hours of study is 5 and 56%. Hours of study is 5 and 56%. You can do like this. Then hours of study is 1 and 42%. 40%. 1 and 40%. Then hours of study half an hour and it is 27%. Half an hour. Half an percent and it is 27%. Now we can draw a straight line like this. Hope you are understanding. Yeah, these things we have done in class 10. Can you see this? So this is a line and this is a best fit line. Best fit line. Why? Because all the points are lying in a line within the line within in the line. Because best fit line, since all the points are lying in the line. Line के ऊपर ही सब कुछ है. Therefore, this is the best fit line. Okay. Now suppose it is given. Hours of study. Hours of study equal to 12.5 hours. So result equal to how much? It is given like this. Now what I will do? Then 12.5 hours. 12.5 means it can be 95%. It can be 95. 12.5 it can be like this, and 95 it can be like this. Okay, over here. But the point is here, na? Can you see the point is over here, and the result is actual result is over here. You can see this. तो ये जो दोनों का डिफरेंस है, ये दोनों का लाइन का डिफरेंस है. दिस इज व्हाट नोन एज एरर. इस एरर को हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है. इस लाइन के ऊपर जो वैल्यू है ये इट कैन बी 85%, बट एक्चुअली क्या है 97. एक्चुअल में क्या है 97% है. तो दोनों में डिफरेंस हो गया ना. तो दिस डिफरेंस इज नोन एज द एरर. वी हैव टू मिनिमाइज this error. We have to minimize this error. Okay. Now let me discuss something. What is this intercept? I have talked about this intercept. You know where is the intercept? This one is the intercept. Now what is this actually? What is this intercept? You all know y equal to mx plus c. Suppose x equal to 0. X equal to 0 means hours of study. X equal to 0 means hours of study equal to 0. Then y equal to how much? Y equal to c. Understood? Suppose y equal to mx plus c. X equal to 0. X equal to 0. M into 0 is 0. So y equal to c. Then c is which value? C is this value actually. Understood? This is the c value. This is c. That is the intercept. एग्जाम्पल ले लो और थोड़ा डिटेल में मैं यदि करना चाहूँ तो हाउ विल अंडरस्टैंड. सपोज c इक्वल टू 0. सपोज c इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5. सपोज तो y इक्वल टू हाउ मच? y इक्वल टू 5, m equal to 1, x equal to 5, x equal to 5. So y equal to 5. How y equal to 5? Y equal to m is how much? 1 into x equal to 5 plus 0. So y equal to 5. So what do we do? X equal to 5. So y equal to 5. X equal to 5. So let me draw one more line. Okay, one more graph.
then only we can understand it properly. Please take one more graph. Okay. Now what happening? What I told you, y equal to mx plus c. Keep in mind, okay, this thing. Now c equal to 0. So y equal to how much? Mx. Suppose c equal to 0. So y equal to mx. Now let m equal to 1. Therefore y equal to क्या हो गया? Y equal to x. Y equal to x मतलब if, let me write, if x equal to 0, then y equal to 0. That means it is passing through the origin. This one is the 0. Okay, it is passing through the origin. X equal to 1, then y equal to 1. Why? Y equal to x. Okay, x equal to 2, so y equal to 2. X equal to 3, so y equal to 3. Can you see this? So what will happen? Here 1, 2, 3, 4, 5. Over here also 1, 2, 3, 4, and this is the 5. This value is 5. Hope आप लोगों को clear हो रहा है. This value is 5. Now what is happening over here? X equal to 0, y equal to 0. So x equal to 0, y equal to 0 is this position. X equal to 1, y equal to 1. X equal to 1, y equal to 1 is this one. X equal to y equal to is this one. X equal to 3, y equal to 3 is this one, and this one. So what is happening? It is going like this. Means it is passing through the origin. Now what I told, this intercept is this one. This value is intercept. Okay. Now I want to prove this thing. Okay. Suppose now I am taking one more case. Suppose c equal to 2, c equal to 2, m equal to 1. So what will happen to the equation? Y equal to x plus 2, y equal to x plus 2, simple. Now what is happening? If x equal to 0, so y equal to how much? 0 plus 2 is 2, so y equal to 2. X equal to 1, so y equal to 3. X equal to 2, so y equal to 5. It's like this. Now let me plot this line also. X equal to 0, y equal to 2. X equal to 0, y equal to 2. So can you see? Y equal to 2. So this one is the intercept. Can you see? It has changed from 0 to 2. So this one is the intercept actually. See, x equal to 1, y equal to 3. X equal to 1, y equal to 3. This one. X equal to 2, y equal to 5. X equal to 2, y equal to 5. This one. Can you see? तो ये जो चीज है, this one is actually C. Hope आप लोगों को clear हो गया. This one is the C. Now we are going to discuss about the slope. Okay, let us discuss about the slope. What is the slope actually? Can you see this? This is 1. This is 2. So what is the difference? The difference is 1. Okay, so can you do like this? This one is 1. The difference is 1. 1 to 2. The difference is 2 minus 1 is 1. Now, if the value is changing in x, what is the change in y? If the value of x is changing by 1 unit, what is the change in y? What is the change in y? What is the change in y? Where is the y? This part is the y. Can you see this line? This one. This is known as the slope or gradient or m, what we are saying. Okay, तो ये जो पोजीशन है, ये जो जगह है, इसको क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं, सिंपल. तो क्या you people understood that this one is the intercept, this one is the slope. You all understood very well. So these things we should know properly, then only we can do something. Okay.
Now let me come again to this point, best fit line. देखो, there can be so many points. जैसे hours of study equal to 12.5, result equal to this, result is how much? ऐसे करके there may be so many points. Hours of study equal to 13.2. The result equal to how much? Result equal to how much? Suppose the result is here 12.5, 13.2, 13.2. The result is here. Okay, can you see? So there is a difference over here also. So you have to minimize the distance. So there can, this is a best fit line, but there can be multiple best fit lines. Let me tell you, for the graph there can be multiple best fit lines. There can be, let me write it. There can be multiple best fit lines. Then there is a question that arises, which one to choose? Now let me, which one to choose? First let me draw again the graph. Let me draw the graph again. Suppose these are the points. These are the points. Whatever, these are the points. So what are the best fit lines it can be? It can be this, it can be this, it can be this. Okay, so there can be multiple best fit lines. I told you. Then which one to choose? कौन सा best fit line I have to choose? So we will choose the line which has minimum number of error points. मिनिमम नंबर ऑफ एरर पॉइंट्स मतलब जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इसके एक एरर हो गए ना, यहाँ पे इसके एरर हो गए, इसके एरर हो गए, तो ये जिसकी मिनिमम नंबर ऑफ एरर पॉइंट्स है, विल चूज दैट. तो हाउ टू चूज दैट? फॉर दैट वी आर गोइंग टू टेक what a cost function. Now what is a cost function? That we will discuss now. Cost function. Now cost function equal to cost function. अब cost function का फॉर्मूला क्या है? 1/2n I equal to 1 to n y hat minus y का whole square. This one is the cost function. Y is the actual output and y hat is the predicted output. एग्जाम्पल ले लो. लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. आप लोग एवरीडे वेदर ऐप चेक करते हो, चेक करके आप लोगों को पता चलता है कल बारिश होने वाला है. कल बारिश होने वाला है. कल बारिश होने वाला कितने बजे है? 12 बजे. तो आप लोग सब बोलते हो कि 12 बजे कल बारिश है. बारिश हुआ 12:05 में. एट 12:05 इट स्टार्टेड रेनिंग. तो व्हाट इज द एरर? इट हैज बीन प्रेडिक्टेड 12 o'clock and it starts raining at 12:05. तो व्हाट इज द एरर? एरर इज ऑफ 5 minutes. अंडरस्टूड? एरर इज ऑफ 5 minutes. सपोज अगेन बोला जो परसों बारिश है 6 बजे और बारिश हो गया 9 बजे. तो व्हाट इज द एरर? एरर इज ऑफ 3 hours. तो वी हैव टू मिनिमाइज दोज एरर्स. तो एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए दिस कॉस्ट फंक्शन इज देयर. कॉस्ट फंक्शन इसका फॉर्मूला क्या? 1/2n I equal to 1 to n y hat minus y का whole square, where y is the actual output and y hat equal to the predicted output, and we have to minimize the error. This one is the cost function and we have to minimize this. Understood? Minimize this. Hope आप लोगों को clear हो गया. We have to minimize. We have to minimize the error or cost function.
यू टू मिनिमाइज इट. मिनिमाइज मतलब इस तरह के मिनिमाइज करेंगे, डाउन करना है इस चीज़ को. ओके, तो हाउ टू मेक इट डाउन विल सी. पहले क्या कर रहे हैं, वी हैव टेकन एग्जांपल लो है ना, जो मीन्स y इक्वल टू mx प्लस c इक्वल टू 0, y इक्वल टू mx, वी हैव टेकन दिस m इक्वल टू 1. विल टेक दिस एग्जांपल अगेन once again. We'll take this example once again and we'll understand the thing properly. Okay, now what I told, y equal to mx plus c, is it clear? Now c equal to 0, c equal to 0, m equal to 1, it's given. So y equal to how much? Y equal to x. So what will happen? This one is the first point, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Is it clear? This one is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Now y equal to x. So if x equal to 1, if x equal to 1, then y equal to 1, x equal to 2, then y equal to 2, x equal to 3, then y equal to 3, x equal to 4, y equal to 4. So it will happen like this. ये एक line है, this one is 1, this one is 1, this one is 1, ऐसे करके चल रहा है. It's going on like this. Can you see? It's going on like this. Okay, this is the best fit line I told you earlier only. Now what I'll do, x equal to 2, y equal to 2, calculate like this, y hat, this one is y hat, this was a y hat, this is the predicted value, and actual value is also the same. Okay, actual value is also the same because there is no difference. नहीं, यहाँ पे कोई values नहीं है, इस सब में कोई values नहीं है. तो फिर क्या हो रहा है, मीन्स क्या हो गया, ये दिस वन इज द बेस्ट फिट लाइन, जिसमें क्या हो गया, सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं. डू यू अंडरस्टैंड? ऑल द पॉइंट्स आर लाइंग ओवर हियर. तो व्हाट विल डू, कॉस्ट फंक्शन इक्वल टू 1/2n, 2 into n is how much, n is number of points, 1/2n I have written over here, n, this n equal to number of points, number of data points. Okay, n equal to number of data points. So how many data points are there? There are 3 data points. 2 into 3 into bracket. What it is written? I equal to 1 y hat minus y का whole square and summation. मतलब क्या होंगे? What will happen over here? 1 minus 1 का whole square plus 2 minus 2 का whole square plus 3 minus 3 का whole square. It is going like this. Equal to how much? It is 0. So if the cost function is 0, then what will happen? If the cost function is 0 means a minimum value, or we are getting the minimum value, that means it is the best fit line. Simple. It is the best fit line. Now what I will do, let us take m equal to 0.5, m equal to 0.5 and c equal to 0. Okay, so what will happen? Y equal to 0.5 into x. Can you write like this? Now when x equal to 1, y equal to 0.5. When x equal to 2, so y equal to 1. 0.5 into 2 is 1. When x equal to 3, so y equal to how much? Y equal to how much? 0.5 into 3 is 1.5. It's like going on like this. Suppose there are 3 points. Now what we will do? Now I am going to find the cost function. Again find the cost function. Cost function equal to 1/2n. 1/2 into 3 bracket. Okay. Now what is happening? 0.5. 0.5. So what we will do? 0.5 minus 1 ka whole square. Suppose actual output is, these are all y hat. Y hat means these are the predicted, and actual output is what? 1. This one is 2, and this one is y equal to 3. Okay, this is the actual output.
Now when the gradient has changed, so the outputs has also changed. The predicted values have also changed. Can you see? I changed the gradient, so the outputs has changed. So 0.1 minus 0.1 minus 1 whole square plus 0.1. How 0.1? Let me see. Sorry, 1 minus 0.5 plus 1 minus 2 ka whole square plus 1.5 minus 3 ka whole square. It's like this. Okay, equal to 1 upon 6 into this is 0.5 ka whole square. 0.5 matlab 0.25 plus 1 minus 2 minus 1 minus 1 ka whole square is 1 plus 1.5 minus 3 is 1.5 minus 1.5. The whole square is 2.25. Okay, now we add all this. 2.25 plus 2.5. 2.5 plus 1 is 3.5. So 3.5 upon 6 is how much? 6, 5, 0, make it 10. So 5, 7, 35, 5, 2 is 10, 6, 7 by 12. 7 upon 12. 7 upon 12 means 0 point, when I put point, 12, 7, 0. 84, 12, 6 is 70, 12, 6 is 12, 5 is 5, 0.59. Almost this is 0.59. So in this way I am getting the cost function. Yeah, here I have got the cost function as 0. Here I have got the cost function as 0.9. Now in this way I am going. So which one is the best fit line? We cannot understand. So this can be understood if the cost function is 0. Here I can see that cost function is 0 because we have taken simple values. Okay, but how is it possible? For that we need to draw one more. You can say that we have to plot one more graph. Okay, and the graph is between when to stop. Okay, इसके लिए ग्राफ लेंगे. We need to draw a graph. Okay, we need to draw a graph. What is the graph? Let us see. Okay. Now take this as m, or you can say gradient. M मतलब क्या होता है? Gradient. And write down the cost function over here. Cost function is over here. Okay, where is the cost function? Cost function is here. Now what it is said, when the gradient, let me see the gradient. When the gradient is 0.5, the cost function is 0.59. Okay, so what you write? You write 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, like this. Okay, and similarly over here I also write like this: 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5. Okay, it's written like this. Now what is happening? Let me see this. 0. जब यहाँ पे m equal to 0.5, so what is the output? Output cost function is 0.59. 0.5, the cost function is 0.59. 0.59. It's here. Can you see this? It's here. Okay. Now when m equal to 1, what is the cost function? 0. M equal to 1. M equal to 1. The cost function equal to 0. M equal to 1. The cost function is 0. It's here. ऐसे करके आप m equal to 2, m equal to 3, you put the values. तो ऐसे करके what I am doing in this way, ऐसे करके ग्राफ बन रहा है. आप क्या करोगे? m equal to 0.5 ले लिया आपने. what you have taken over here? m equal to 0.5. ऐसे करके you take m equal to 1, m equal to 0.7, m equal to 0.8. इस तरह you take it like this. ऐसे करके values लोगे तो you will get the cost function. Similarly you will get the cost function values. Okay, cost function. यहाँ से cost function निकाल लोगे. Okay, you will find the cost function.
ऐसे करके वैल्यूज चलेंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह, ऐसे करके द ग्राफ हैपेंस टू बी लाइक दिस, द ग्राफ हैपेंस टू बी लाइक दिस, द ग्राफ हैपेंस टू बी लाइक दिस एंड कैन यू सी दिस मिनिमम वैल्यू, दिस वन, इसको क्या बोलते हैं, दिस वन इज नोन एज, ये जो लास्ट वाला वैल्यू मिनिमम है, दिस इज नोन एज ग्लोबल मिनिमा. ओके, नाउ दिस मिनिमा, ये तो इजीली हमें, बिकॉज वी हैव प्लॉटेड थ्रू दिस सिंपल इक्वेशन एंड वी हैव गॉट दैट दिस इज जीरो, तो दिस वन इज द ग्लोबल मिनिमा. समझ में आ गया. देयर आर lakhs of data points, lakhs of data points. So how to find out which one is the global minima? We do not know. So for that we need to know one theorem to come to the how to come to the global minima. How to come to global minima. यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या किया, यहाँ पे m इक्वल टू 1 ले लिए, m इक्वल टू, आई हैव टेकन m इक्वल टू 1 एंड वी गॉट 0. इट्स सो सिंपल. लेकिन जब लैक्स ऑफ पॉइंट्स होगा तो मैं ये ग्लोबल मिनिमा ढूंढ ही नहीं पाऊंगा. तो हाउ टू कम टू द ग्लोबल मिनिमा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ग्लोबल मिनिमा आने के लिए, ये इट माइट हैपन द टाइम ओवर हियर, अब यहाँ से यहाँ तक आना है, हाँ, या इस जगह में है, वी आर इट ओवर हियर, यहाँ से मुझे इधर आना है, तो कैसे आएंगे, हाउ टू कम ओवर हियर. ये सब आने के लिए भी तो मुझे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा. ऐसे तो नहीं मैं हवाई में यहाँ पे उठ के आई विल कम ओवर हियर. तो फॉर दैट देयर इज वन मोर थ्योरम एंड दैट इज नोन एज कन्वर्जेंस थ्योरम. What is this convergence theorem? M equal to m minus dou m by dou m into alpha. Now what is the alpha? We are going to understand this thing also. Let me square it. Okay. अब क्या है, ये जो m है, सपोज द m इज ओवर हियर, ठीक है, तो m को मुझे अपडेट करके यहाँ पे आएंगे ना, वी आर गोइंग टू अपडेट द वैल्यूज एंड विल कम ओवर हियर. ओके, एक बार यहाँ पे है, फिर अपडेट होकर इधर आया, फिर अपडेट होकर इधर आया, एंड वी गेट टू द ग्लोबल मिनिमा. या ओवर हियर आई एम, सपोज ओवर हियर, तो यहाँ से अपडेट होकर इधर इस पोजीशन में है, इससे अपडेट होकर इस पोजीशन में है, तो ग्रेडियंट इज गेटिंग अपडेटेड. तो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, m इक्वल टू m माइनस डो m बाई डो m इंटू अल्फा. नाउ ये डेरिवेटिव, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव से ही ग्रेडियंट निकलता है. m इक्वल टू dy बाई dx, ये फॉर्मूला है. ओके, अब ये डेरिवेटिव कैसे निकलता है, यहाँ से मैं ये दिस इज अ कर्व, दिस इज एक्चुअली कर्व. अब इसमें स्लोप कैसे निकालना जाता है, ग्रेडियंट कैसे निकाला जाता है, एक स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये काइंड लाइक दिस. और ये स्ट्रेट लाइन डिफाइन कैसे होते हैं, वी डिफाइन इट थ्रू द हेल्प ऑफ एक ग्रेडियंट. सिंपल, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जस्ट सिंपल dy बाई dx एक ग्रेडियंट है, उस ग्रेडियंट के थ्रू से ही मैं इधर आ रहा हूँ. एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस, और स्ट्रेट लाइन ये कर करके हम लोग क्या करेंगे, विल कम टू द ग्लोबल मिनिमा. नाउ व्हाट विल हैपन, एंड व्हाट इज दिस अल्फा, दिस वन अल्फा इज द लर्निंग रेट. ठीक है, लर्निंग रेट. अल्फा शुड बी a minimum value. Maybe alpha equal to 0.001. इतने मिनिमम मुझे वैल्यू लेना पड़ेगा. ज़्यादा वैल्यूज लेने के लिए अल्फा इक्वल टू 1 या कुछ अल्फा इक्वल टू सपोज मैंने 1 ले लिए. 1 लेने से क्या होगा, आई शो 1, सपोज बड़ा मैंने लर्निंग रेट रेडी, तो फास्ट कन्वर्जेंस होगा. या ये जैसे मैंने ऐसे स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं ना, वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप, क्या व्हाट आई एम सेइंग, इट्स गोइंग लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस. लेकिन अल्फा इक्वल टू यदि मैंने 1 ले लिया तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इस तरह से जाएगा. इट विल गो लाइक दिस, इट विल कम लाइक दिस, इट विल गो लाइक दिस, इट विल गो लाइक, एंड इट माइट हैपन दैट इट मे नॉट कम टू द ग्लोबल मिनिमा. यदि मैं ज़्यादा अल्फा लर्निंग रेट यदि हाई ले ले तो इट मे नॉट कन्वर्ज टू द ग्लोबल मिनिमा. If alpha is taken higher value, इसका मतलब है higher value, then alpha may not
converge to global minima. As a result, we won't get best fit line. We won't get the best fit line. Understood? तो हमें अल्फा को स्मॉल रखना पड़ेगा. अंडरस्टूड? अब एक चीज और है, एक है पॉजिटिव स्लोप, एक है नेगेटिव स्लोप. वी विल डिस्कस अबाउट दिस. व्हाट इज द पॉजिटिव स्लोप एंड व्हाट इज द नेगेटिव स्लोप. सपोज द वैल्यू इज हियर, आई एम ओवर हियर. हम कहाँ पे हैं? हम इस जगह में. कहाँ पे? इस जगह में. इस जगह में मतलब मैं इस जगह में हूँ. तो यहाँ से मुझे ग्लोबल मिनिमा जाना है, ऐसे करके. ओके. तो ये क्या है? ये इधर से यदि है तो दिस वन इज द पॉजिटिव स्लोप. ओके. नाउ इफ इट इज a positive slope, let me show you. M equal to M minus positive slope into alpha. Okay, positive slope. तो M equal to what? M minus M equal to M minus पॉजिटिव स्लोप है, मतलब क्या हो रहा है? M माइनस, ये M का वैल्यू है. ठीक है. अब M इधर जा रहा है तो क्या होगा? माइनस वो होके जाएंगे ना. वी आर गोइंग टू डिडक्ट द वैल्यूज ना. इधर इट्स मैक्सिमम, इट आई एम कमिंग टू दिस साइड. तो व्हाट विल हैपन? आई एम सब्ट्रैक्टिंग. तो इफ इट इज पॉजिटिव स्लोप तो M माइनस पॉजिटिव स्लोप इनटू अल्फा, मतलब क्या हो रहा है? ये माइनस वो होके वी आर गोइंग टू द ग्लोबल मिनिमा. ओके. तो दिस वन इज द पॉजिटिव स्लोप. तो इधर यदि है तो दिस वन इज द पॉजिटिव स्लोप. कीप इन माइंड. एंड सपोज मैं इधर हूँ इस तरफ, तो दिस वन इज द नेगेटिव स्लोप. ठीक है. नेगेटिव स्लोप होने से क्या होगा? ऐड होके ये सारे वैल्यूज क्या हो गए? ऐड होके मैं इस पोजीशन में पहुंचेंगे. ऐड होके विल ऐड द वैल्यूज. यहाँ पे सपोज -2 है तो व्हाट विल डू? -2 है तो -2 हो गया और मुझे पहुंचना कितना? 0 में. सपोज इट इज ए नेगेटिव स्लोप. -2 है, देख लो. तो -2 तो प्लस करना पड़ेगा ना. +1 सपोज आई एम डूइंग. तो आई गॉट -1 +1 व्हाट यू गॉट? 0. मतलब क्या हो रहा है? ये ऐड होते जा रहा है. ऐड नेगेटिव यदि स्लोप है तो क्या होगा? ऐड हो के इस तरफ जाएगा एंड वी गेट द 0 वैल्यू. ओके. मतलब क्या होगा? ये तो हो गया फॉर पॉजिटिव. इफ इट इज नेगेटिव फ्रॉम LHS, ये RHS का था. RHS में पॉजिटिव स्लोप, ये राइट हैंड साइड है. दिस वन इज द RHS पार्ट, right hand side, and this one is the LHS part. Okay. From LHS, M equal to M minus bracket minus negative slope into alpha. तो माइनस माइनस इज प्लस. तो M plus माइनस माइनस इज प्लस M plus slope into alpha. M प्लस मतलब क्या हो रहा है? सपोज आई एम ओवर हियर, ये एट दिस पोजिशन, तो यहाँ से प्लस हो के मुझे इस तरह जाना पड़ेगा. मैं ज़्यादा वैल्यू में हूँ और मुझे 0 में आना, तो क्या करना होगा? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट एंड विल कम ओवर हियर. अंडरस्टूड? लेट मी एक्सप्लेन वन मोर. आई हैव टू कम टू 0 एंड आई एम एट 5th पोजिशन. लेट मी शो यू थ्रू दिस इज 0, दिस वन इज द 5th. तो मुझे इस पोजिशन में आना है. तो हाउ विल आई कम? तो माइनस करना पड़ेगा. आई हैव टू माइनस. 5 minus 1 is 4, 4 minus 1 is 3, 3 minus 1 is 2, 2 minus 1 is 1, and I am coming over here. So we are subtracting and we are coming over here. Understood? So this is what I am writing. I am subtracting and I am coming to the global minima. Suppose मैं लेफ्ट हैंड साइड में हूँ, इस जगह में. Okay, and this is -4. So I have to come to 0. तो -4 plus 1 is -3, -3 plus 1 is -2, -2 plus 1 is -1, and -1 plus 1 is 0. We come to 0. Understood? So I am adding the things. So this is what I am saying. तो ऐसे करके जब 0 तक हम आ जाएंगे, 0 तक हम आ जाते हैं, this 0, then what do we do? We stop the iteration. When we come to a global minima,
we stop the iteration. And we get the best fit line. We get the best of fit line. मतलब everything is dependent on the gradient. Gradient is very important, or slope you can say. Slope से ही सब कुछ होता है. Keep in mind. ठीक है. उसके बाद बेस्ट फिट लाइन. Iteration or you can say training. Iteration or training. ये तो ट्रेनिंग ही हो रहे हैं. Suppose I am over here. I have to come to 0. तो हम कैसे आएंगे? तो we have to come to like this only. The way I have told you. तो होप आप लोग को ये लीनियर रिग्रेशन क्लियर हो गए. नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. ओके, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ये भी आप लोग का है. मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, लेट मी गिव ए जिस्ट ऑफ इट. मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. मल्टीपल तो इसमें किस तरह का होता है? y इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस डॉट 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 ऐसे करके है. तो यहाँ पे x1 x2 x3 डॉट 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 xn ये सारे क्या फीचर्स है. एंड फीचर्स किस तरह का फीचर? इंडिपेंडेंट. And y is the output. Okay, y is the output, and the value is output is numerical. So this is multiple linear regression. We will discuss regarding this in the next class. Okay, and it is very simple. First you go to the linear regression, जिसमें क्या है? one input है and one output है. If you understand this, तो multiple linear regression is not a very tough task. Hope I have explained the things, and आप लोग थोड़ा सा प्रॉपरली इस लेक्चर को देखिए. एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, गो थ्रू द लेक्चर अगेन एंड अगेन. इफ़ यू गो, यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली. एंड इफ देयर इज स्टिल एनी इशू और डाउट, यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर.